So let us start the session. Today we are going to start session number 4 of chapter number 14, practical geometry. In this session we are going to learn about how to construct perpendicular bisector of a line segment, and we will complete exercise 14.5. So let us start with the first topic, to construct a perpendicular bisector of line segment. इसको हम लोग रोबो कंपास में देख लेते हैं. Right. So first one, to construct perpendicular bisector of a line segment. Right. So यहाँ पे line segment AB दिया हुआ है. AB का हम लोग को perpendicular bisector draw करना है. So what we will do, we will draw a line segment AB first. ठीक है. First we will take point A and point B. Then we will join these 2 points using ruler. ठीक है. AB को join करेंगे हम लोग using ruler. Now with center A, we will draw two arcs on this side and this side, ठीक है, such that the radius should be more than half of AB. AB के half से ज़्यादा होना चाहिए. अभी same radius with center B, we are going to draw 2 arcs on both sides. Now this side, now both will intersect at 2 points. इसको C और इसको D ले लेते हैं, ठीक है, C and this point is D. Right? Now we are going to join CD using ruler. CD को join कर रहे हैं. AB को वो point O पे intersect कर रहा है. This point is O. Right? Now CD is the required perpendicular bisector of AB, and O is the midpoint of AB. Right? So this is the construction based on which we have to start the exercise 14.5. So let us start with the first question of exercise 14.1. Question है, draw AB of length 7.3 centimeter and find its axis of symmetry. Axis of symmetry is nothing but it is a perpendicular bisector. ठीक है, ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है. So let us start with the first step. We will draw a line segment AB of length 7.3 centimeter using ruler. ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B ले रहे हैं, पॉइंट A, पॉइंट B. Now we are going to join these 2 points using ruler. ठीक है, ये एक approximate length है, but when you are going to draw on your paper, exact measurement लेना है. Now with center A, we are going to draw 2 arcs on both sides of radius more than half of AB. Now with same radius with center B, we are going to draw 2 arcs on both sides, right? Both will intersect at point C and D. ठीक है, यहाँ पर भी intersect हो रहा है. So this point we will take C and this point we will take D. After that we will join CD. This point is C and this point is D. We will join CD. ठीक है. Now join CD by using ruler. Both the line will intersect AB at point M. This point is M. So here CD is the required axis of symmetry of line segment AB. Okay, so this is the first question of NCERT. Now we are moving toward the second question. Draw a line segment of length 9.5 centimeter and construct its perpendicular bisector. तो पिछले क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखा हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो विल फॉलो द सेम स्टेप्स. ठीक है, फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 9.5 सेंटीमीटर. वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ. सो एक पॉइंट P ले रहे हैं पहले, P and Q we will take P and here we will take Q such that the length should be equals to 9.5 centimeter. Now we will join using ruler. ये भी approximate value मैंने लिया है समझाने के लिए. Now with center P, we will draw 2 arcs on both sides, up and down, ठीक है, top and bottom, such that the radius should be more than half of PQ. Now with the same radius with center Q, we have to draw. Q से draw कर रहे हैं, देखो, both will intersect at point C and D. बिल्कुल similar है जो हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में किए. This point is C and this point is D. Now after that, we will join CD by using ruler. ठीक है, C और D को हम लोग ज्वाइन करेंगे रूलर का यूज़ करके. एक मिनट, ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग CD, राइट, एंड विच विल इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट O.
So CD is the required perpendicular bisector of line segment PQ and O is the midpoint of PQ. ठीक है? So this is the question number 2. Now we are moving toward question number 3. Right? Question number 3. Already मेरे ब्लॉग में ये लिंक है. You can go through this link and you can go through this construction also. Right? So third question. Draw the perpendicular bisector of XY whose length is 10.3 centimeter. Take any point P on the bisector drawn. Examine whether Px is equals to Py. If M is the midpoint of XY, what can you say about the length MX and XY? ठीक है, तो इसको हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं. पहले हम लोग XY एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, राइट, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Right, so first we will take a point x, then take point y, then we will join xy with the help of ruler. ठीक है, such that the length should be 10.3 centimeter. So पहले x ले रहे हैं. Now we are going to take y. Okay, now we are going to join xy using ruler. After that we have to draw the perpendicular bisector. So with center x we will draw two arcs on both sides, up, top and bottom. Okay, and the radius should be more than half of xy. So x से हम लोग दो arc draw कर दिए. Now with center y we are going to draw the two arcs on the both sides with same radius. Right, both will intersect at 2 points C and D. ठीक है, ये वाला point C ले रहे हैं और इसको हम लोग D ले रहे हैं. ठीक है, point C and point D. After that we will join CD by using ruler. Okay, now we will take this point as M. Okay, now we will measure this XC. एक point P लेके ये दोनों measure करेंगे. दोनों equal आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये वाला measure कर लेते हैं. PY, PX और PY both are equal or not. Okay, तो ये यहाँ पर 9.9 आ रहा है और ये भी मेजर कर रहे हैं तो 9.9 आ रहा है. दैट मीन्स Px is equals to Py, right? And what we can say that point Mx is equals to half of xy. So this is question number 3. Now we are moving toward question number 4. ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. Draw a line segment of length 12.8 centimeter using compasses. Divide it into 4 equal parts. तो हम लोग को इसको 4 equal parts में divide करना पड़ेगा. ठीक है, so let us start with the first one. First we will draw a line segment AB. ठीक है, of length 12.8 centimeter. We have to verify by actual measurement also. चलो point A और B ले रहे हैं हम लोग. A, B. Then we will join these 2 points by using ruler. और इसका जो length है वो 12.8 centimeter होना चाहिए. Okay, so now with center A we have to draw 2 arcs on both sides and the radius should be more than half of AB. ठीक है, दोनों तरफ draw कर लिए. With same radius with center B we are going to draw on both sides. Now we will draw on this side. Okay, both will intersect at point C and D. तो इसको C और इसको point D ले लेते हैं. C and this point D. Now we will join CD by using ruler. Okay, so it will intersect AB at point O. This point is O. अब AO को bisect करना है. फिर से A से हम लोग 2 arc draw करेंगे. Such that the radius should be more than half of AO. ठीक है, so दोनों साइड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. Now with center O we are going to draw with same radius. So both will intersect at 2 points. So दोनों points को हम लोग ले रहे हैं E and F. ठीक है, इस point को E ले रहे हैं और इस point को F लेंगे. After that we will join these 2 points using ruler. This point is F. Now we will join EF using ruler. Okay, it will intersect this AB at point M. This point we are going to take M. Right,
सेम हम लोग BO को बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, BO का. So with center O we are going to draw two arcs on both sides such that the radius should be more than half of OB. So O से हम लोग ड्रॉ कर लिए. Now with same radius we are going to draw with center B on both sides. ठीक है, इस साइड में ड्रॉ किए. Now we are going to draw this side. Both will intersect at point 2 points. So एक को G और एक को H ले लेते हैं हम लोग. We are going to take this as G and this as H point. ठीक है. After that we will join GH by using ruler. GH को ruler से join कर रहे हैं हम लोग. So it will intersect OB at point N. This point is N. Now we have to verify by actual measurement. ये चारों तो equal हो गया. AB is equals to MO is equals to ON is equals to NB. That is AB is divided into 4 equal parts. Now we are going to verify with actual measurement. See, this is 3.2. This is also coming 3 point. This should also come 3.2. इसको भी हम लोग actual measure कर रहे हैं. This is also 3.2. And the last NB is also 3.2. So hence verified. Okay, so this is question number 4. Now we are moving toward question number 5. So question number 5 है with PQ of length 6.1 centimeter as diameter draw a circle. तो diameter के लिए हम लोग को mid point हमारे पास होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, AB ड्रॉ करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. ठीक है. फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB डायमीटर. ठीक है, राइट. AB एक्चुअल में PQ लेना था, सो मैंने AB लिया है, उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है. सो AB को ज्वाइन कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. सो विद सेंटर A वी आर गोइंग टू ड्रॉ आर्क ऑन बोथ साइड्स such that the radius should be more than half of AB. ठीक है. अगर half of AB से कम होगा तो वो intersect नहीं करेगा. Now with same radius we are going to draw on arc on both sides with center B. So both will intersect at point C and D. This point is C and this point is D. ठीक है. उसके बाद हम लोग CD को ज्वाइन करेंगे. CD को ज्वाइन करेंगे रूलर से. It will intersect AB at point O. Right. Now with center O and OB radius we are going to draw one circle. And this is the required circle. Required circle of diameter 6.1 centimeter. Okay, this is question number 5. Now we are moving toward question number 6. Question number 6 is draw a circle with center C and radius 3.4 centimeter. Draw any arc, any chord AB, construct the perpendicular bisector of AB and examine if it passes through C or not, that is center or not. चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट C लेके, सेंटर C लेके हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. चलो, वी आर गोइंग टू टेक वन पॉइंट C. यहाँ पे ले रहे हैं पॉइंट C. ठीक है. नाउ विथ सेंटर C एंड रेडियस 3.4. ठीक है, ये 3.4 है CP. वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन सर्कल. राइट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन कॉर्ड. तो कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट ले रहे हैं सर्कल में, A और B. उसके बाद AB को ज्वाइन कर लेंगे. वी विल ज्वाइन द AB. सो हम लोग को कॉर्ड मिल जाएगा. वी विल ज्वाइन AB बाय यूजिंग रूलर. Now AB का perpendicular bisector. So with center A, we are going to draw 2 arcs on both sides, such that the radius should be more than half of AB. Now with same radius, we are going to draw 2 arcs on both sides with center B. देखो इस side हम लोग draw कर लिए. Now we are going to draw this side. So both will intersect at 2 points, point M and N. ठीक है, this is point M. And this is point N. After that we will join MN, right? MN को join करेंगे and we will check whether this line is passes through point C or not. Yes, answer is yes. The perpendicular bisector of the chord AB passes through point center C. Right. So this is question number 6. Now we are moving toward question number 7.
Question number 7 is draw a circle with center C and radius 3.4 centimeter. Draw any diameter AB. Construct the perpendicular bisector of AB and examine if it passes through center or not. ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं विथ सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. ठीक है, सो वी विल टेक वन सेंटर C, एक पॉइंट ले रहे हैं C यहाँ पर, देन रेडियस 3.4 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग. दिस इज पॉइंट C and we will take one point B such that the distance is 3.4 centimeter. Now with center C and radius CB we are going to draw the circle. Now we are going to draw the diameter. Okay, diameter draw कर रहे हैं. Diameter chord passes through the center. Right, now we are going to draw the perpendicular bisector of AB. So A से हम लोग दो arc draw कर रहे हैं दोनों साइड में. We are going to draw the arc on both sides such that the radius should be more than half of AB. Now with same radius with center B we are going to draw the two arcs on both sides. Now इस साइड में draw कर रहे हैं and both will intersect at point M and N. ठीक है, ये वाला point M है और ये वाला point N है. Right, now after that we will join M and N. Join करने के बाद we will check whether it passes through the center or not. चलो join कर रहे हैं. पास हो रहा है सेंटर से. यस, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर ए बी passes through the center C. So this is question number 7. Now we are going to do the question number 8. ठीक है, question number 8. Draw a circle of radius 4 centimeter. Draw any two chords of its chords. Construct the perpendicular bisectors of these chords. Where do they meet? Right, कहाँ पे वो intersect हो रहा है. चलो फर्स्ट हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. राइट, आफ्टर ड्रॉइंग सर्कल वी विल ड्रॉ एनी टू chords. चलो विथ सेंटर C वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन सर्कल. एक पॉइंट C ले रहे हैं हम लोग, दिस इज पॉइंट C सेंटर, और एक पॉइंट P ले लेते हैं विच इज एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम C. Now with center C and radius CP we are going to draw one circle. Okay, अब इसमें दो chord draw कर रहे हैं. AB, point A यहाँ पे ले लेते हैं, point B इस साइड में ले लेते हैं. Right, अभी AB को join करके उसका perpendicular bisector draw कर लेते हैं. Right, चलो with center A we are going to draw two arcs on both sides. Right, such that of radius such that the radius should be more than half of AB. AB के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए. Now with same radius with center B we are going to draw two arcs on both sides. Both will intersect at point M and N. ठीक है, ये point M है और ये point N है. After that we will join M and N. ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा chord draw करेंगे. चलो इसको join कर रहे हैं हम लोग, ज्वाइन कर लिए. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अनदर कॉर्ड PQ. P ऑलरेडी है, एक Q पॉइंट ले लेते हैं. नाउ वी विल ज्वाइन PQ. उसके बाद PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो विथ सेंटर P वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू आर्क्स ऑन बोथ साइड्स सच दैट द रेडियस शुड बी मोर देन हाफ ऑफ PQ. ठीक है, दोनों साइड ड्रॉ कर रहे हैं. नाउ विथ सेम रेडियस विथ सेंटर Q वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू आर्क्स ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, इस साइड ड्रॉ किए, अब इस साइड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. नाउ बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E एंड F. इसको E ले लेते हैं और इसको F. आफ्टर दैट वी विल जॉइन EF. ठीक है, EF ज्वाइन करने के बाद नाउ वी विल चेक वेयर दे इंटरसेक्ट, वेयर दे मीट. दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सेंटर. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द chords meet at center C. So this is question number 8. Now we are moving toward last question number 9. ठीक है, इसका जो ब्रीफ स्टेप्स है वो मेरे ब्लॉग में दिया हुआ है रोबो कंपास मटेरियल में. ठीक है, लिंक है रोबो कंपास रिसोर्सेस. यू कैन गो थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑल्सो. राइट, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Draw any angle with vertex O
टेक पॉइंट ए on one of its arm, ठीक है, and B on another such that OA is equals to OB. Now draw the perpendicular bisector of OA and OB. Let them meet at point P. Is PA is equals to PB? We have to check. चलो हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, राइट इसमें पहले हम लोग को क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है विथ वर्टेक्स O, राइट. सो वी आर गोइंग टू टेक वन वर्टेक्स O फर्स्ट, point O, now point A, right, we will join OA by using ruler, right. उसके बाद हम लोग एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग 70 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, और OP ले रहे हैं इसमें सच दैट OP इज इक्वल्स टू, देखो OP इज इक्वल्स टू OA, इस पॉइंट को हम लोग P ले रहे हैं, ठीक है. OA को मेजर करके यहाँ पे कट करना है, सो OP मिल गया. OA is equals to OB. Now what we have to do? We have to draw the perpendicular bisector of OA and OB. तो अभी हम लोग OA का perpendicular bisector draw कर रहे हैं. We are going to draw the perpendicular bisector of OA. So with center O, we have to draw arcs on both sides, such that the radius should be more than half of OA. Now with same radius, with center A, we are going to draw the arcs on both sides. They will both will intersect at point C and D. इसको point C ले रहे हैं और इसको point D ले रहे हैं. Now we will join CD using ruler, ठीक है. CD का यूज करके हम लोग रूलर का यूज करके CD को ज्वाइन कर लिए. Now we are going to draw the perpendicular bisector of OB. With center O, we are going to draw two arcs on both sides, such that the radius should be more than half of OB. Now with same radius with center B, we are drawing the two arcs on both sides. Both will intersect at point M and N, ठीक है. इसको M ले रहे हैं और इसको N ले रहे हैं. Now we will going to draw, we will going to join M and using ruler, ठीक है. दोनों intersect कर रहा है एक पॉइंट पे, इसको पॉइंट P ले लेते हैं, ले लिए. अभी PA और PB का मेजर करना है हम लोग को, सो PB मेजर कर रहे हैं, राइट, 5.5 आया. PA मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो 5.5. सो हम लोग का आंसर है यस, PA इज इक्वल्स टू PB, राइट. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT exercise 14.5. Now we are moving toward assignment section. 4 questions are there, so I will share through Google Classroom. So that's all for today's session. Thank you very much.